Please record the Yes. class. So can you see this screen? Yes. F of minus x is equal to fx. Similarly, if f of minus x is equal to minus fx, then that is called odd function. Okay. So our function was fx is equal to x square. So is that even function or odd function? Probably it's even. Even function, because instead of x, when you put minus x, you get same value, x square. So f of minus x is equal to And fx. it will be a So it is, positive project. yeah. And what if I give you another function, fx is equal to x cube. Fx is equal to x cube. Yes, Prajit. Prabhuji, You are not able to understand. So Write it down, may be odd and even also. write down fx is equal to, Hare Krishna. yes, fx is equal to x cube. Yes, Prajit. So is this function even or odd? Prabhuji, it's both. Odd. Why both? No, odd. odd Prabhuji. Prabhuji, if we let's say take the value of x2, so it will be even. What is the definition of odd function? If f is fx, no. Is equal If to f of minus fx x is equals to minus fx. So you put f of your function is fx is equal to x cube. Now you Yes. put f of minus x, means instead of x you put minus x. So what will be the value function? odd function. Odd. Minus. Odd function. You are getting minus x fx. cube. Yes. Yeah. Okay. Yes. We are getting minus x cube. So that is an odd function. Is it clear? Even function, odd function? Prabhuji, I can't. Prabhuji, why it is odd function, Prabhuji? I am not reaching you, Prabhuji. It is See, not visible here. if you put minus x in the Not function, visible here. yes, not visible, only Yeah, to yeah, you okay. or everybody? Okay. Haribol? Yes, Prabhuji. Hare Krishna? Yes. Yeah. Okay. Yes, so you can see that this function is even function. So whatever the values were in the positive Yes, side, for 2 the value was 4, same values are for negative side also. Means f of minus x is equal to fx. Are you able to understand by the graph? Yes. F of minus x, whatever values are on negative side, for the same corresponding x you are getting same values. Okay. And why? For y equal to minus 2, f of minus 2 is equal to f of 2. F of minus 4 is equal to f of 4. You have plotted these points. You see f of minus 4 is 16 and f of 4 is, what is f of 4? 16. 16. F of minus 3 is 16. 9 and f of 3 is also 9. So therefore you can 9. see this function is symmetrical about y axis. जैसा ये फंक्शन y एक्सिस के राइट साइड में है वैसा ही लेफ्ट साइड में भी है. Yes. So this is called even function. F of minus x is equal to f of x. And this is called odd function.
Here the function is fx is equal to minus x cube. So whatever the values are there in Yes, right sir. side, same values are there on the left side, but in negative sense. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Is, Krishna, Prabhuji. is my voice clear? Yes, sir. Yes. Yes. So here you see function is fx is equal to x cube. So what is the value of f of minus 1? F of minus 1. Yes. Mm-hmm. Function is equal to x cube. -1. हाँ minus 1. Odd. और f of 1 क्या है? 1. 1. Even. So not even odd. This Okay. whole function is odd function because f of Okay. minus 1 is equal to minus times f of 1. You see, if you put minus x here, you get here minus x cube. Minus x cube को लिखोगे तो क्या हो जाएगा? Minus fx. Will show you on the Word file. I think it is difficult to explain on PDF. Who is writing? हरि बोल प्रभु जी. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna प्रभु जी. Your voice is getting echo प्रभु जी. Echo. Now, what are you seeing on the screen? Graph. On Yeah, the screen, sir. there is an example 14 and a graph. Okay. So here you can see that for f of 2 is equal to 8, means x cube is 8, and f of minus 2 is minus 8. Okay, so just see the sign is changed. Here f of 2 is 8 and f of minus 2 is minus 8. Yes, sir. F of 3 is 27, f of minus 3 is minus 27. The sign is changed, just it is becoming minus times. So similarly for f of x will become minus fx. Minus fx means अगर यहाँ पे x क्यूब की जगह तुम x के अंदर माइनस x लिखोगे तो ये क्या पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? Negative. माइनस x क्यूब हो जाएगा.
हाँ Yes. माइनस एक्स क्यूब मतलब, और एफ एक्स तुम्हारा एक्स क्यूब है, तो माइनस एक्स क्यूब मतलब माइनस एफ एक्स. It will be whole positive. नॉट होल पॉजिटिव. हम्म, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब मतलब क्या हुआ? माइनस एफ एक्स हुआ कि नहीं हुआ? हाँ. एफ एक्स इज हाँ इक्वल हाँ टू yes एक्स yes क्यूब, yes 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 तो माइनस एक्स क्यूब यू And- जस्ट रिप्लेस एक्स क्यूब बाय एफ एक्स. yes yes. तो तो माइनस एफ एक्स. minus f x. So for f minus x, the function is becoming minus f x. Therefore, it is odd function. Okay. तो ये जितनी भी odd powers होंगी सबके लिए फंक्शन odd हो जाएगा, क्योंकि odd power के लिए f of minus x is equal to minus x. Even power के लिए f of minus x will become f x, क्योंकि वो माइनस को even powers कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा. जैसे अगर यहाँ पे x टू दी पावर 4 होता और x की वैल्यू तुम -2 रखते, तो क्या वैल्यू फाइनली क्या वैल्यू आती? 16. 16. माइनस साइन चला जाता, so therefore fx that becomes even function, because fx is equal to f of minus x is equal to fx. So for today, I hope this much is sufficient. Yes. This greatest integer function, have you read before or not? No, Prabhuji. No Not project. read. So I'll just explain to you what is Yes. greatest integer function. Greatest in Yes. कंप्यूटर में पढ़ा होगा, पर ऐसे मैथमेटिक्स में पता, आई डोंट नो, हैव यू स्टडीड? हाँ प्रभु जी, कंप्यूटर में पढ़ते हैं greatest integer. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है, अगर देखो वैल्यू इफ द वैल्यू इज 1.5, ओके, तो Yes. 1.5 से जो अगला इंटीजर है, नहीं 1.5 से जो पहले वाला इंटीजर है जो ग्रेटेस्ट है, उसको हम लेते हैं. मतलब क्या हो जाएगा? 1.5 से पहले का इंटीजर क्या है? 1.4. इंटीजर. द इंटीजर बिफोर दैट नंबर. 1.5 के पहले कौन सा इंटीजर पड़ता है? 1. 1. 2.3 के पहले कौन सा इंटीजर पड़ेगा? 2. 2. और -1.2, ओके. इससे पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा पड़ेगा? 0. 0. -1. -1. Oh हाँ minus -1.2 से पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा पड़ेगा? -1. 1. ठीक है. और -2.3 से पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा पड़ेगा? -2. -2. So you understand, greatest integer will give the value of greatest integer before that number. Yes, Prabhuji. Okay, so therefore it will take only integer values. This function will give only integer values. Integer तो इसको इस bracket से represent करते हैं. Are you seeing this bracket? Yes. 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 If I write bracket of 3.5, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? If I Prabhuji, write, 3. yes, correct. If I write bracket of -4.2, उसकी वैल्यू कितनी होगी? It's 4. 4. Yes, correct. So you understood? Yes. Yes, Prabhuji. So this is called greatest integer function. उसी तरह से least integer Prabhuji, function. your voice is breaking similarly. Hare Krishna. Hare Krishna. Is it coming? Yeah. Okay, done, Prabhuji, done. Yes. So least integer function is not given in this, but I am just explaining to you.
लीस्ट इंटीजर फंक्शन जस्ट इसका रिवर्स होता है. Your voice is breaking. So you can see means -1.2 की वैल्यू है 1, 1.3 की वैल्यू है 1.3 की वैल्यू क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में? 1 1. 1.7 की वैल्यू क्या होगी? 1 1.9 की वैल्यू क्या होगी? 1 2 की वैल्यू क्या होगी? 2. 2 हाँ 2 की वैल्यू होगी 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर. और 2.3 की वैल्यू आपस में क्या खींचपीच कर रहे हो तुम लोग? 2. nothing Prajit, nothing. हाँ तो 2.3 की वैल्यू होगी 2 और 3 की वैल्यू 2 क्या होगी? 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 3. हाँ 3 की वैल्यू होगी 3. एंड अगर फंक्शन है तुम्हारा वैल्यू है -1.3 तो क्या होगी वैल्यू? -1 -2. -1.3 Prajit, -2. it's -1 -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? Greatest. -1 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है? -1. I told lower. ग्रेटेस्ट इंटीजर. और -1 पे क्या वैल्यू होगी? -1 हाँ -1 पे वैल्यू होगी -1 मतलब जो इंटीजर पॉइंट्स पे वैल्यू सेम होगी और जो फ्रैक्शनल पॉइंट्स हैं डेसिमल पॉइंट्स उस पे जो उसके ग्रेटेस्ट पहले वाली होगी जो पहले. हाँ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो वैल्यू है. Okay Prajit. ठीक है. Yes. So I want all of you to submit the previous assignment. Okay. Yes. All of you have to submit the previous assignment and I'll Prajit, give. but Yes. Prabhuji, we should submit our assignments through by clicking its photo and by sending it to you. Yes. You write complete the assignment on copy. Write down your name in capital letters, big letters on the copy. Click the photo and send it to me on WhatsApp. Okay. Okay. So you must write down your name also. Hare Krishna. Okay, Prabhuji. Okay. Hare Krishna. If somebody could not Hare understand Krishna. today anything, so you can ask personally also. If you want to stay, anybody want to ask something, you can stay. okay Prajit, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Pranshu, do you want to ask something?